Okay, so this is chapter number 1, नंबर सिस्टम. तो आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे. सो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम आते हैं तो रियल नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि दो चीज़ों से इसका यूनियन है. वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक क्यू और एक क्यू डैश. सो व्हाट इज क्यू? क्यू इज माय रेशनल नंबर and q dash is my irrational number. So a real number consists of my rational number and an irrational number. So what is now a rational number? So rational number is a number which can be written in the form of p by q, and where q does not equals to 0, that my denominator does not equals to 0. So the examples are under root 16. So under root 16 is the square of 4 and square and under root will be cancelled out. So my answer will be 4. 3 upon 4, 2.7 are the examples of rational numbers. Now next is my terminating. Terminating are the decimals that are finite. Finite means they have a certain limit, while recurring don't have the limit. They repeat itself indefinitely. So there are two major types of decimals. First are terminating and second are recurring decimals. Now pi is my recurring decimals, and both decimals are basically terminating and recurring are rational numbers. Okay. So irrational number cannot be put in the form of p by q. And now under root form, always know that अंडर रूट फॉर्म इज नोन एज माय इरेशनल नंबर. सो आपने हमेशा याद रखना है कि जहां अंडर रूट आ जाएगा और वो कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं होगा. लेट्स से अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 अब मेरे पास रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है. क्यों? कि अंडर रूट 4 का जब हम लेंगे स्क्वायर लेंगे तो वो 2 का स्क्वायर होगा. सो माय अंडर रूट will cancel out with my square. So the answer will be 2. So this is the irrational numbers. Okay, so now the binary operations. So binary operations basically deals with a set of rules. Okay, so हम इसमें प्रॉपर्टीज ज़्यादा डिस्कस करते हैं. So प्रॉपर्टीज में आते हैं तो पहली प्रॉपर्टी है मेरे पास एडिशन प्रॉपर्टी, जिसमें a और b लेट्स से मेरे पास रियल नंबर है, तो मेरे पास इन दोनों का सम a प्लस b भी रियल नंबर होगा. एसोसिएटिव लॉ पे आते हैं तो तीन पैरामीटर्स, तीन वेरिएबल्स हैं a, b एंड c. सो a प्लस b प्लस c विल बी इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c. सो दिस बेसिकली डील्स दैट हमारी अरेंजमेंट जो मर्जी हो, हमारा आंसर सेम आएगा. एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि वो नंबर ऐड किया जाए कि मेरा जो वेरिएबल है उसमें कोई चेंज ना है. तो 0 इज माय एडिटिव आइडेंटिटी. कम्यूटेटिव लॉ इज सेज दैट अगर हम a प्लस b सम करते हैं, लेट्स से a इज 2 एंड b इज 3, तो a प्लस b का आंसर एंड b प्लस a का आंसर सेम आता है. दिस इज नोन एज बाय कम्यूटेटिव लॉ. सो प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो मल्टीप्लिकेटिव में आते हैं तो वही क्लोजर लॉज है, एसोसिएटिव है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं हम, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है कि जिसके साथ लेट्स से मेरा वेरिएबल 2 है, 2 के साथ में क्या चीज मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा आंसर 2 रहे, so that number will be 1. So multiplicative identity की जब बात करेंगे तो 1 is known as my multiplicative identity. Multiplicative inverse की बात करेंगे, so inverse will be कि कोई भी पैरामीटर, लेट्स से 2 है मेरे पास, 2 के साथ क्या चीज में मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा आंसर 1 आए, so it will be always be 1 upon 2, that is its reciprocal. तो हमेशा कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बनाने के लिए उसके इनवर्स यानी कि
रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा मेरा आंसर 1 आता है। तो ये मेरे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जनरल फॉर्म है, जिसमें कोई भी नंबर हो तो वो इक्वल टू 1 है, एंड सेकंड इज द इनवर्स, सो इट विल बी इक्वल्स टू 1. So it will be one dash, it always equals to a for multiplicative identity. Okay. All are बाकी जो मेरे पास प्रॉपर्टीज है सारी सेम है. क्लोजर लॉ मल्टीप्लिकेशन सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा, एसोसिएटिव में सेम एज अबव, एंड कम्यूटेटिव लॉ के अंदर भी मेरे पास मल्टीप्लिकेशन का पैरामीटर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू अगर हम बात करते हैं एडिशन पे. ओके. So now multiplicative addition law, basically this is known as distributive law. So distributive law मेरे पास left distributive law and right distributive law होते हैं. Again distributive law में मेरे पास दो parameters हैं. First is my left distributive law, second is my right distributive law. So left distributive law is like that, a plus b. So now a will be multiplied with this one, so this will be ab plus AC. So this is known as left distributive law. Second is my right distributive law. So it will be AC plus BC. So this is known as right distributive law. Any set possessing all the above 11 properties is known as field. तो जिसमें ये सारी 11 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट्स में या सेट ऑफ प्रॉपर्टीज में, इन्हें हम उस चीज को हम कहते हैं फील्ड. This is the introduction to exercise 1.1. अब मेरे पास इक्वालिटी की आ जाएंगी. इक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी में सबसे पहली आ जाएगी मेरे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी इज नोन एज माय, जब मेरा एक पैरामीटर लेट्स से 1 है, 1 इक्वल्स टू 1, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. So general notation is a equals to a. Symmetric property says that if a equals to b, so this means that b equals to a. Transitive property में हमारे पास ये कहता है कि अगर मेरे पास तीन पैरामीटर्स हैं, अगर a b के बराबर है, b c के बराबर है, so this means that a equals to c. Addition property is same. Let's say a equals to b. So अगर मैं a में और b में सेम चीज ऐड करता हूं तो मेरा आंसर सेम रहेगा. सो इट मींस दैट a plus c equals to b plus c and c plus a equals to b plus c. Multiplication is same like addition. Cancellation is just say a plus c equals to b plus c. Now the common thing is c, so हम c को neglect कर देंगे. So this will take that a equals to b, same as in case of multiplication. Now this is the properties of equality. Now properties of inequality, first it is trichotomy, that two numbers will either be equal to, greater than, or less than. Then the transitive says that a is greater than b and b is greater than c. This means that a is greater than c. And second, less than, so a is less than c. Additive will be like हमारे पास a is greater than b है तो a plus c is greater than b plus c, same like lesser than. Now if a is greater than b and c is greater than d, so this means that a plus c is greater than b plus d. And if a is less than, so it is a plus c is less than b plus d. तो ये मेरे पास demonstration है additive property. Moving towards the next one is my multiplicative property. Multiplicative property is, let's say a is greater than b, so ac is greater than bc. Is in case of less, so ac is less than bc. In case when c is less than 0, so this means that a is greater than b. अब c की वैल्यू मेरे पास 0 से कम है, that is it whether b it is negative value. हम let's suppose करते हैं मेरे पास a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू जो है मेरे पास 4 है, and c value is less than 0, that it is -1. For first parameter 5 is greater than 5
is greater than 4. Yes, it is right. But when C is less than 0, so minus 1 will be multiplied, so it will be minus 5 is less than minus 4. So this means that when C is negative, my sign will be changes. Now for, let's say is greater than B. So this is same like AC is greater than BC. And for less, AC is less than BD. Okay, now moving towards the next one. Okay, now question number 1, exercise 1.1. So for exercise but 1.1, the first question is, which of following sets have closure property with respect to addition and multiplication? So the first value is 0. So when 0 is added to 0, when 0 is added to 0, so 0 plus 0 equals to 0. So this is the member of this set. And again, when it is multiplied, so 0 dot 0 is a member of 0. So this means that 0 is a closure property with respect to addition and multiplication. When it is taken 1, so 1 को हम क्या करेंगे, 1 को 1 plus 1 यानी कि 2 दफा एक नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस भी करेंगे. सो 1 विल बी 1 plus 1, 1 plus 1 मेरे पास होता है 2, एंड सेकंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा. अब देखें, अब जब 1 है, 1 मेरे सोल्यूशन का सेट है, यस 1 है मेंबर. 2 क्या 2 है, 2 is not member of this one. So with respect to addition, ये this set is not closed, and with respect to multiplication it can be closed with respect to multiplication. Now 0 and minus 1. 0 minus 1 की दफा हम क्या करेंगे, हमने ले लिया 0 एंड माइनस 1. सबसे पहले मैं प्लस करूंगा इसमें 0. ओके, 0. सो 0 plus 0, the answer is 0. Then negative 1, negative 1 plus 0, answer is negative 1. Okay, now for second case, निचली तरफ मैंने जब जाना है तो मैं कहूँगा 0 minus 1, so the answer is minus 1. This is the answer. Then minus 1 minus 1, so the answer is minus 2. So my last answer is what, minus 2. Again I will explain it. Yes, let's say plus करना है मैंने और 0 और negative 1 है. So first it will be 0 plus 0, so answer is 0. Okay, this will be plus and there's the answer of 0. Then minus 1 plus 0, so the answer is minus 1. Now 0 again take 0 and minus 1 here, because इसमें ये करना है हमने कि जब हम प्लस लिखेंगे यहाँ पे तो मेरा ये वाला सेट यानी कि ये साइड 0 1 0 minus 1, बिकॉज ये मेरे सबसेट का हिस्सा है, और 0 minus 1 मैंने यहाँ पे भी लिखना है. ठीक है, फिर इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना. So 0 minus 1, it will be minus 1 0 and minus 1 minus 1, the answer is minus 2. और जो मेरे पास लास्ट में आंसर आएगा minus 2, इसको बेसिकली ये मेरा आंसर होगा. अब मैंने minus 2 देखना है क्या मेरा minus 2 0 minus 1 का इस सेट का हिस्सा है. सो हम एनालाइज करते हैं कि minus 2 is a part of this one, so it cannot be closed with respect to addition. अब सेकंड केस में मल्टीप्लाई करना है सेम. 0 विल बी, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई का साइन डालना है और ये 0 negative 1 लिखने हैं, फिर 0 negative 1 ये वाले लिखने हैं. So 0 will be multiplied by this one, so the answer is 0. Minus 1 will be right here, so 0 will be this, and at last the answer is what? Answer is 1. So what does this mean? This means that this set is not closed with respect to addition as well as multiplication. Now moving towards the next part, 1 minus 1. This is same as we done before. First this will perform 1 plus 1, the answer is 2.
then -1 plus 2, we have to perform it, then this to this one and this one. Okay, तो इस तरह हमने परफॉर्म करना है इसको। अगर मेरा आंसर, लेट्स से इस केस में मेरा आंसर आ रहा है -2, और मेरे पास यहाँ पे आ रहा है 1, so -2 will not be a part of this, so it cannot be written in with respect to addition, but जब मल्टीप्लिकेशन की दफा आएंगे हम, तो 1 is the part of this one, so it can close with respect to 1. Okay, I'm moving towards the next question. Next question is my, okay, ये हमारे पास 1 से लेके 12 तक डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, इसको हमने डिफाइन करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी इज 4 + 9 = 9 + 4, दिस इज माय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और बीच में साइन देखें पॉजिटिव है, सो इट विल बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब देखें सेकंड, a + 1 + 3/4, तो हमें बचल क्या, a फर्स्ट पैरामीटर है, सेकंड एंड थर्ड, सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस केस में देखें ये भी एसोसिएटिव है, 0 + 0 100 + 0, सो इट विल एडिटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लाई 1 हो रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब नेगेटिव है इसका तो एडिटिव इनवर्स, नेगेटिव सो एडिटिव इनवर्स अगेन। This is also the commutative property with respect to multiplication. This is the distributive property and left distributive property. ये मेरे पास देखें, अब ये राइट पे है मेरे पास z, अब यहाँ देखिए a मेरे पास लेफ्ट पे था, तो दिस इज नोन एज लेफ्ट। जब z बेसिकली इस साइड पे राइट पे है, तो इट इज नोन एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगेन ये मेरे पास a से इस तरफ आ रहा है, तो दिस इज दी left distribution property. Okay, so moving towards question number 3. Now ये जो है मेरे पास -3 is less than -2, so this will be 0 is greater than less than 1, sorry. So this is my additive property. So कैसे पता चला मेरी additive property है, -3 के अंदर अगर मैं -3 + 3, okay, and same as -2 + 3। अब आप कहें +3 क्यों आपने ऐड किया, +3 दोनों साइड पे ऐड किया है, बिकॉज मेरे पास आंसर आ रहा है इस साइड पे 0 और इस साइड पे 1, सो दिस विल डिफाइन दैट 0 is less than 1। सो ये मेरे पास क्या है, मैंने एडिटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऐड की है। सेम एज दिस वन, इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया है। ओके, दिस इज अगेन एडिशन प्रॉपर्टी। दिस इज -1 यहाँ मल्टीप्लाई किया है, तो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। दिस इज आल्सो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जब मैंने इसका रेसिप्रोकल a से इसका रेसिप्रोकल किया, तो माय साइन विल बी चेंज, यहाँ पे ग्रेटर देन है तो वहाँ लेस देन हो जाएगी। अगेन फॉर दिस वन, जब मैं साइन चेंज करूंगा, तो माय साइन विल बी रिवर्स्ड। ओके, okay, now we have to prove the questions a upon c plus b। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। सो मेरा लेफ्ट हैंड साइड इज a upon c plus b upon c। सो सबसे पहले मुझे पता है कि इसके अंदर एक जो प्रॉपर्टी ऐड हो रही है वो मल्टीप्लिकेशन की ऐड हो रही है, दैट इज 1 upon c will be multiplied with this one both sides पे, प्लस b into 1 upon c। ओके, सबसे पहले हमें ये करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दैट इज दिस वन। अब मेरे पास a + b जो है अलग हो जाएगा और 1 upon c कॉमन आ जाएगा। सो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कौन सा होगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सो दिस विल बी डिफाइंड दैट माय लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड विल बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके इसके डिफरेंट जो है राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के प्रूफ करते हैं। नाउ द सेकंड पार्ट इज माय a upon b इक्वल्स टू, इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले अब मेरा यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले मैंने 1 मल्टीप्लाई करना है, साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया, देन क्रॉस, देन देखना है कि मेरे पास यहाँ पे कौन से बी डी, यानी कि मेरे पास दो पैरामीटर्स हैं बी डी, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बी के साथ डी को एंड डी के साथ बी को।
so it will be d upon 1 upon d and b upon this one. So ये मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे, and I will multiply a to d and b to d, तो मेरे पास ऐसा आ गया. नाउ a to d, अब जो डिनोमिनेटर है मेरे पास इसको कॉमन ले लेना है, दैट इज 1 अपॉन बी डी, सो इट विल बी कॉमन लाइक दिस वन, और मेरे पास चीजें क्या बच जाएंगी, ए डी प्लस बी सी. सो ए डी प्लस बी सी अगेन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मेरे पास ये प्रूफ हो जाएगा. दिस इज सेम एज द क्वेश्चन नंबर 1. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, सॉरी, यस, प्रूव करना है हमने कि नेगेटिव 7/12 negative 5/18 equals to this one. So first thing is, सबसे पहले हमने इसी तरह इसमें 1 मल्टीप्लाई करना है, दिस इज 1. फिर उसके बाद हमने इसमें देखें 12 and 18 इज जस्ट लाइक, हम अगर इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज 12 and 18, अगर हम सब सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बी 2:3. इज इट क्लियर? सो 3 ये जो रिवर्स करेंगे, 3 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एंड 2 विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस वन. अगेन दिस विल बी 3/3 एंड 2/2 इन नेक्स्ट सिचुएशन. फिर उसके बाद 7 को 3 के साथ, 12 को 3, 5 को 2 के साथ एंड 18 को 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द पार्ट. अब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, एंड देन इसमें क्या करेंगे, 1/36 कॉमन ले लेंगे. इसी तरह 1/36 कॉमन ले लिया तो -21 -10 जो है मेरे पास आ जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज माय रिक्वायर्ड आंसर. ओके, सो क्वेश्चन 14 के अंदर भी हमने ऐसे ही करना है कि 1/4 को कॉमन ले लेना है, फिर 1/4 कॉमन करके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है. सो इट विल बी सेम एज, फिर उसके बाद इन दोनों प्रॉपर्टीज में से 1/4 कॉमन ले लेना है, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 + 4x. ओके, 1/4 + 5, इसको हमने अगेन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है. 1 विल बी जस्ट लाइक माय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद हमें क्या करना है कि 20 को क्यों कर रहे हैं हम, अगर 4 और 5 कैल्शियम लेते हैं, सो द आंसर इज व्हाट, आंसर इज 4 × 5 = 20. तो मैं 20 को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा. अब 20 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया होल इक्वेशन के साथ. अब इस 20 को होल अंदर मल्टीप्लाई करना है, 1/4 के साथ भी 20, 1/5 के साथ भी 20, सो इट विल बी लाइक 1/4 = 20 एंड दिस. फिर इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कॉमन लेके करना है. 20 क्या होता है मेरे पास, 4 × 5, सो इट विल बी 4 × 5. जो इसका मल्टीपल होगा, 1/4 का मल्टीपल 4 है, 1/5 का मल्टीपल 5 है, तो इसको इसके साथ यानी कि 5 और इसका इनवर्स आ जाएगा. सो इट विल बी टेकन एज 5 + 4 / 5 - 4 after simplification, and the answer is 9/1, which will be equals to 9. Okay. अगेन ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी सेम उसी तरह करना है कि हमने पहले 1 ले लेना है, फिर उसके बाद बी डी अपॉन, क्योंकि बी डी क्या है कि उसके डिनोमिनेटर में है बी डी और 1/BD. देन आफ्टर वी हैव टू मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये बी डी, फिर बी डी को मल्टीप्लाई, अगेन बी डी, फिर इनके साथ इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो जाएगी. आफ्टर दिस इसके मल्टीपल और इसके इनवर्स देखने हैं हमने, और उसके बाद हमें ए डी प्लस सी बी अपॉन ए डी अपॉन माइनस सी बी, ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा. होप यू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. दिस इज द लास्ट पार्ट. इस पार्ट पे भी हमने वैसे ही करना है कि ए बी मेरा डिनोमिनेटर में है, तो ए बी के साथ मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है. फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ए बी को म्यूचुअली मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट के अंदर, एंड देन आफ्टर उसके पेयर्स बना देने हैं. पेयर्स कैसे बनाने हैं, अगेन ये ट्रिकी पार्ट है. इसमें 1/A है तो उसके साथ पेयर्स का बनेगा A, अगर 1/B है तो पेयर बनेगा B. सो वाई 1/A, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस A एंड दिस A विल बी कैंसिल आउट, और मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, सेम एज इन केस ऑफ B.
सो इट इज डिफाइंड दैट हमने डिनोमिनेटर को देख के अपने मल्टीपल डिसाइड करने हैं और फिर उनको सिंपली मल्टीप्लाई करके रिक्वायर्ड आंसर अचीव कर लेना. ओके, नाउ दिस इज एक्सरसाइज 1.2. so we have to verify that the closure property. so closure property कैसी होती है? closure property एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि अगर इसके अंदर मैं 4 पैरामीटर्स ऐड करता हूँ, a, b, c, d is a member of c. okay, so a plus a, b. अब देखें जो फर्स्ट पार्ट है, it is the real part, so it will be a plus ib. okay, I mean iota is always my second part, is also always my complex part. so a plus iota b plus c plus iota d. अब इसके बाद a plus c टर्म्स अलग कर देंगे, iota की टर्म्स अलग कर देंगे. so this will be like that. so इसके बाद मेरे पास कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे a plus c पहला कोऑर्डिनेट, कोमा b plus c is my second coordinate. ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर मेरे पास 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी डी और ई एफ. तो इसमें सेम हम ए प्लस बी, ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी प्लस ई प्लस ई एफ. तो इसमें ए प्लस सी प्लस ई एक तरफ और बी प्लस डी प्लस एक तरफ. सो इट विल बी ए प्लस सी प्लस ई, कोमा, this is the first term, and second term is b plus d plus f, same like in the right hand side. okay, additive प्रॉपर्टी के लिए सिंपल हमने 0 ऐड कर देना है, a b लेके 0 plus 0. so 0 plus 0 will be like, it will be my a plus 0 and b plus 0. so the answer is my a plus b. एडिटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसके एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट इज a, so the inverse will be a negative a, and then b, so negative b. और उसके बाद हमने इस पैरामीटर को डिफाइन कर देना है कि पहला पॉइंट जो होगा, इसको अगर हम सम करेंगे a और नेगेटिव a को, तो आंसर मेरा हमेशा 0 आएगा. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इस पे सेम हमने क्या करना है, a plus b, so a plus ib and c plus id. so a plus c मेरा पहला कोऑर्डिनेट and id is my second coordinate. so this will be c plus a और a plus c equal to this one. next हम अगर हम करते हैं c plus id and a plus ib, so this will be my cd comma ab. okay, वेरीफाई दी मल्टीप्लिकेटिव. सो क्लोजर के केस में हम क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे. अब हमने क्या करना है, ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी को. अब हमने इस तरह करना है, ए को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ, सो दिस विल बी ए सी. फिर ए को मल्टीप्लाई करना है आई डी के साथ, सो ए आई डी. सेकेंड केस में आई बी को करना है आई बी सी हो जाएगा, एंड सेकेंड इज आई स्केयर बी डी. सो व्हाट इज आई स्केयर? नाउ आयोटा विल बी मेजर पैरामीटर. आई बेसिकली iota is the value under root minus 1. क्या iota की मेरे पास वैल्यू क्या है, under root minus 1. so taking the square, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, iota square आ जाएगा. so this will be negative 1 under root and square. this square will cancel out this one, so my answer equals to negative 1. so this parameter must be added in multiplication. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर भी जो मेरे पास पैरामीटर नया ऐड होगा वो आई स्क्वायर का है. आई स्क्वायर का बेसिकली आई स्क्वायर की जगह मैंने क्या डाल दिया था, नेगेटिव 1. सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड पैरामीटर. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के अंदर सिंपल हमने 1 ऐड करना है. एज यू वी डिस्क्राइब दैट 1 एक ऐसा पैरामीटर है कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर मेरे पास वही रहता है कि देयर इज नो चेंज. इनवर्स के अंदर मैं उसका इनवर्स ले लूंगा. लेट्स से मेरे पास a प्लस आई बी है, सो द इनवर्स विल बी माय a प्लस आई बी इनवर्स. सो दिस विल बी 1 अपॉन दिस. अब 1 अपॉन a प्लस आई बी है. a प्लस आई बी डिनोमिनेटर में मेरे पास नीचे प्लस आ गया, तो मैं इसको कॉन्जुगेट ले लूंगा, दैट इज a माइनस आई बी, और a माइनस आई बी मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, डिवाइड भी कर दूंगा.
आफ्टर दिस मैंने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है। नाउ ये नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, so iota square is my negative one, so negative negative will be positive, so the answer will be this one. Same like in case of commutative property, so please do commutative property too. Okay. अच्छा, now the next one is distributive property. Distributive property is also same, बस उस तरह मैंने तीन पैरामीटर लेके इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो द फर्स्ट विल बी ए बी सी डी प्लस ए बी ई एफ। सो इसको अगेन मल्टीप्लाई करके आयोटा स्क्वायर की टर्म्स को सिर्फ रिप्लेस कर देना नेगेटिव वन से। नाउ सिंप्लीफाई इट, सिंप्लीफाई मींस आयोटा 9 विल बी व्हाट, आयोटा 9 विल बी आयोटा 9। सो मुझे पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव वन है, मुझे इवन वैल्यूज का पता है, सो इट विल बी आयोटा 8 इंटू आयोटा, so iota 8 will be iota 2 4, so it will be negative 1 4, and iota will be this one, so my value equals to iota. Same in case of iota 14, 2 power 17 minus 1 power 7, so the answer is negative 1. In case of 19, so it will be iota into this one, so this one will be equals to 18 into 1, so iota square power 9, so this will be negative 1, negative 1 square 9 will be negative 1, so the answer will be iota. So answer will be iota. Now negative 1 power negative 21 upon 2. So how to do it? सबसे पहले हमने क्या करना है, नेगेटिव 1 इसको हमने कन्वर्ट कर देना है नेगेटिव 1। अब पावर मेरे पास है -21/2, तो मैंने 1/2 को अलग कर देना है और -21 को अलग कर देना है। ओके, -21। अब मेरे पास आप पूछे क्यों किया, -1 पावर 1/2 की वैल्यू होती है क्या, आयोटा, सो इट विल बी आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। I will be put all the values, so after putting the value मेरे पास आ जाएगा आयोटा -21। अब इसको डिनोमिनेटर में लिखना है, डिनोमिनेटर में लिखने के बाद मैंने क्या करना है, आयोटा 20 और आयोटा में कन्वर्ट कर देना है। आयोटा 20 विल बी आयोटा स्क्वायर की पावर 10 एंड आयोटा, so iota square will be what, -1 power 10, and this will be, after substitution the value is negative iota. Okay, let's move to the next question. अच्छा, -1 भी इट्स सेम लाइक आयोटा की वैल्यू डालनी है, so please do the practice. -14 will be नेगेटिव अंडर रूट 1 को मैं अलग कर दूंगा, अंडर रूट 16/25 मैंने अलग कर दिया, फिर अंडर रूट 16 अपॉन दिस वन है, इसको हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 4/5, सेम लाइक इन केस ऑफ दिस वन, इसको नेगेटिव अलग करके दिस विल बी माय आयोटा 1/2, सो आयोटा इन डिनोमिनेटर, आयोटा कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, इसको हमने ऊपर यानी कि डिनोमिनेटर में लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन माय आंसर इज आयोटा अपॉन 2, iota upon 2. So this is the answer of this question. Okay, so now simple simplification, दो वैल्यूज के साथ मैंने जो है सिंप्लीफाई कर देना है। अगर प्लस है तो पहली वैल्यू उसी तरह हमेशा मेरे पास प्लस होगी, दैट इज फर्स्ट वैल्यू इज नॉर्मल वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू इज माय आयोटा वैल्यू। तो ये ऑल पैरामीटर्स आर डन ऑन दिस वन। तो डिवीजन का पैरामीटर है उसमें ये हो जाएगा कि मेरे पास डिवाइड में आ जाएगा, तो मैंने इसका जो डिवीजन वाला पैरामीटर है इसका कॉन्जुगेट लेके रैशनलाइज कर देना है। तो आफ्टर रैशनलाइजेशन आई हैव अटेन्ड माय डिजायर्ड आंसर। ओके, इस तरह ये सेम, इट्स ऑल अबाउट रैशनलाइजेशन। नाउ प्रूव दैट द सम। ओके, अब मैंने दो वैल्यूज लेनी है, फर्स्ट इज z इक्वल्स टू a प्लस ib और उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। कॉन्जुगेट मींस ये होता है कि जो मेरे पास आयोटा के साथ जो भी साइन है वो इनवर्स हो जाता है। सो वो कह रहे हैं प्रूव दैट इज सम एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट नंबर इज रियल नंबर। तो सम लेंगे a प्लस ib,
दिस इज 2a। अब मल्टीप्लाई करूंगा, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। सो दिस इज फॉर सम and this is for product. So this shows that my answer is a real number. Okay, so this is the part related to this one. Now the this is same, इसके अंदर okay मैंने multiplicative inverse find करना है। multiplicative inverse के लिए ये होता है कि जो पहली वैल्यू है, this is the formula, आपने फार्मूला याद रखना है फर्स्ट वैल्यू के लिए, it will be a upon a square plus b square, and for the negative value is my imaginary value, that b upon a square plus b square. Now what is the first value? First value is -4, ये हमने put कर देनी है। Then this will be again a square plus b square, a square plus b square. So यहाँ से मेरा desired answer आ जाएगा, it will be same. So always remember this formula. This is for again a upon a square plus b, ये रियल पार्ट के लिए होगा, फिर बीच में कोमा आ जाएगा, नेगेटिव b अपॉन a स्क्वायर प्लस b, दिस इज फॉर माय इमेजिनरी पार्ट, एंड मेरी सेकंड वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ गिवन नंबर। ओके, फैक्टराइज में सिंपल हमें फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बना के मैंने उसको आयोटा की फॉर्म में लिखना है। इन केस ऑफ आयोटा स्क्वायर, लेट्स से पहली वैल्यू जो है उसमें मैंने नेगेटिव डाल के उसकी नेगेटिव वैल्यू, सो नेगेटिव वैल्यू विल बी व्हाट आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा स्क्वायर डालने के बाद ए स्क्वायर, ये मेरे पास उसका होल स्क्वायर ले लूंगा, सो दिस विल बी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। दिस इज इस केस में मेरे पास 9, 3a प्लस 4 हो जाएगा, 3a प्लस 4 बी आयोटा। ओके, अगेन इन दिस केस मैंने 3 कॉमन ले लेना है, x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस y स्क्वायर, so this will be iota square in this one. So here it applies the formula that 3a square minus b square, a plus b into a minus b, that is x plus iota b into x minus iota b. Now in this case when there is a division, this is question number 16, so we have to rationalize. हमें rationalize करना है, rationalize करके हमने formula apply करके हमें अपना आंसर find करना है। Okay, so this is now the second one is the same, इसके अंदर भी हमने rationalize करना है, 1 प्लस आयोटा को rationalize करना है 1 माइनस आयोटा। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, मेरे पास एक स्क्वायर है ऊपर, स्क्वायर को हमने सॉल्व करना है। आफ्टर सॉल्विंग दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सो मैंने अपनी जो कॉन्जुगेट वैल्यू लेके इस अपने सिस्टम को सॉल्व करना है थ्रू रैशनलाइजेशन। माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, अगेन 1 प्लस आयोटा को हमने क्या कर लेना है, हमने कॉन्जुगेट ले लिया, तो 1 माइनस आयोटा, then iota will multiply with this one, so it will be iota into iota square, and then this will be 1 square minus iota square. So again इसमें यहाँ पे 1 plus iota into 1 minus into minus iota, so 1 plus 1, so this will be 1 plus iota divided by 2. This will be my desired answer. So this is the end of the exercise 1.2. So hopefully inshallah we will meet the next lecture with exercise 1.3.